So I suggested her कि why don't you make vlogs? Such a boring day. I asked the manager also कि यार ये इतना content ये दिन भर में इतना मतलब ये तो मैं I said her also कि आप इतना जो बात कर रहे हो इसके दिन के आपको 2 मिलियन व्यूज मिल सकते हैं. So she was like कि आप ही क्यों नहीं बनाते, आप रिकॉर्ड कर लो फिर. थोड़ा कुत्ता टॉमी तो बहुत इंस्टिंक्टिव, बहुत ही फास्ट फटाफट बना दिया था. एंड एज आई सेड कि शहनाज जैसे बात करती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पंजाबियत इन हर वॉइस. क्या करूं मैं, मर जाऊं? जो कुछ भी बोलती है ऐसे लगता है पंजाबी ही बोल रही है. कोई भी लैंग्वेज में बोलेगी तो ऐसे लगता है पंजाबी बोल रही है. तो पंजाबी मैंने सोचा कि इसमें अगर भांगड़ा ढोल होगा, मेरे दिमाग में वही बजा रहा था कि शाहरुख खान जो बजाते हैं मोहब्बतें में. साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता. इनफैक्ट इस पे तो जाकिर खान ने भी बोल दिया था, ओके फाइन, यशराज इज सेंट बाय गॉड टू डू दीस फन रीमिक्सेस. Yeah, he called me also. He never called, like I messaged him so many times. He never replies, but after watching this video, he called me कि बहुत अच्छा बना है. अच्छा, ठीक. I'm a huge Kapil Sharma fan. I'm not done yet. I love his comedy. I love the show. अच्छी बड़ी लगती है लेकिन समझ में नहीं आती. Binge watching Shark Tank India. हर रात को मैं लगा देता हूँ और most the memes people are sending me, there are most of Namita Thapar's clips where she's saying कि I am out but all the best. And she does that to almost She says it's everyone. not my expertise, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. This is not my expertise, मुझे समझ नहीं आ रहा है. I am out. So and she smiles and says all the best. Comments तो लड़के करते हैं क्योंकि ज्यादा consumption करने वाले या फिर engagement करने वाले लड़के हैं, और वो भी specific ages 17, I think 18 to 21, 22 के लड़के, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं YouTube पे या फिर इधर. Yashraj, thank you so much for your time today. Second time we're speaking and it's never a boring day with you, Yashraj. Thank you so much. Thank you, Divya, for having me. And this is the second time we are meeting, yes, and it's always been great. And while we're saying that it can never be a boring day with you, it's actually your track. Such a boring day which is making headlines. मतलब हर कोई social media पे यही शेयर कर रहा है. It's being played on loop. You look for शहनाज bites, या वो खुद ही आके मतलब मैसेज करके दे देती है कि देखो ये भी चल जाए. No, वो तो मैं पहले ही कुछ महीने पहले ही बना चुका था ट्रैक आधा उसका. And then I realized उसके आगे मैं उसको डेवलप नहीं कर पा रहा था for some reason. So I had just stopped making the track, and suddenly one day I was just going through my older files and I thought why shouldn't I just complete this audio? So I added a melody to that. It was a 30-second thing before. And when I added a melody, then I thought, why shouldn't I just ask Shehnaaz to sing in it? So it would be a nice content piece if my dialogue mashup is going and suddenly Shehnaaz appears on the screen. So I texted her on the DM. I sent her the track, and she liked it. So when she liked it, then I asked her कि आप गाओगे क्या इसमें 2 लाइन आपको गाना है? तो हाँ मैं गा दूंगी. She was okay with it and she said कि ठीक है आप ट्रैक भेज दो, मैं स्टूडियो जाके रिकॉर्ड कर देती हूँ. And that is how she sent me the audio. We completed the audio here, and then I went to Mumbai to shoot that part with her. And it came out the way I thought it in my head कि ऐसा अच्छा लगेगा. These people will start here, they'll engage here. The moment they start they feel like ये bore हो रहा है, redundant हो रहा है, that suddenly Shehnaaz will come in on the screen, and that will give them a high. And it fit well, सब सही बैठ गया, and it is crossed I think 6 million views on YouTube now. Yes. In fact, the last time, the two of you had gotten together, you'd collaborated, that was for Twada Kutta Tommy. मतलब Deepika, it wasn't just Deepika and Ranveer, who had shared and, who had their own versions of the track. But there were so many other celebrities, who were actually talking about it, grooving to it, had a different spin to it altogether. With this track, are you expecting again Deepika, Ranveer to do their own bit? Are you expecting a similar major reaction from others? Actually, see what happens. No, because I've been creating content for a decent amount of time now, so I know that things that work really well, are the things that happen for the first time. Now, this is not for the first time this is happening, so it might not get that kind of traction. But definitely people are liking it and all. But it always happens for the first video. Yashraj, you have clearly cracked the code. मतलब आपका ऐसा नहीं कि पहली ही वीडियो बहुत चली है. Every video that you've been putting out,
with God's grace, has been doing really, really well. In fact, इसपे तो जाकिर खान ने भी बोल दिया था, okay, fine, Yashraj is sent by God to do these fun remixes. Yeah, he called me also. He never called, like I messaged him so many times. He never replies, but after watching this video, he called me कि बहुत अच्छा बना है और मजा आ रहा है सुनने में. So I was very happy about that. And just not Zakir Khan, let me tell you, there's Tanmay Bhatt Yes. who said Archana Puran Singh has already laughed, so I guess I'm not really needed. Yeah, crazy it was. Yeah. Archana Puran Singh was the first comment, I think. Oh, yeah. And And it's it not just came out really well, yeah. Yeah, it came out really, really well. And in fact, I was going through the BTS of this video, which I think has also gone viral. Yashraj, मतलब कुछ Yeah, भी आप करते हो ना, वो viral तो होना ही है. I like the इतना BTS ज्ञान. video more. Exactly, इतना ज्ञान शहनाज दे रही है, and I think it's just her innocent Ah. self, which is again sort of struck a chord with the audience. But the two of you, what sort of chemistry is it? How did the bond begin? So we initially started speaking about the track and we recorded it. The day I went to shoot, and she's very nice. She's a very sweet person. Everybody knows, people who follow her from Bigg Boss. She's very sweet and very warm. And initially we were just talking about this track and how we are going to shoot it and what is the structure and all. And later, as I started speaking to her on that day, I realized that she's so full of happiness, and there's so much content in the way she speaks and the kind of things she says. So I suggested her कि why don't you make vlogs? आप vlogs बनाना चाहिए. I asked her manager also कि यार ये इतना content, ये दिन भर में इतना, मतलब ये तो I said her also कि आप इतना जो बात कर रहे हो इसके दिन के आपको 2 million views मिल सकते हैं. So she was like कि आप ही क्यों नहीं बनाते, आप record कर लो फिर. Then I started कि ठीक है फिर मैं record कर लेता हूँ, and I just put on my camera and she started speaking, and I have like a 30 minute of footage where she's just speaking about random stuff which I like. She just kept on talking. I kept asking her questions. She talked about spirituality, she talked about movies she was watching, she talked about multiple things. So I had to cut down a lot of it to just compress it in a 10-minute video. अरे वो भी डाल दो. That will also fetch views. I'm sure. Or I'm really happy with the video, how the video is turned out. This is the first vlog. I've never put vlogs before this, and this is the first vlog I've put, and I'm so happy that I recorded it and put it out. But she is also very smart. She has become really strong. Somehow, when the last time I met her on a show, I see a difference in her. She has got more depth to her personality. She talks about the way she talks about spirituality, and she has started meditating and all. It's everything was very smooth, like, and she is like at heart she's a very happy person. No. अच्छा यशराज, मतलब इतना, I think Bigg Boss is not just known for the contestants, but it's also known for your contribution. मतलब unknowingly you made Bigg Boss everyone's favorite. अब आ भी जाओ फिर Bigg Boss में. अरे नहीं बाबा, मैं नहीं रह सकता उधर. बहुत इतना स्ट्रेस और इतना हर वर्ड को इतना बहुत उसमें मैं तो नहीं रह ही नहीं पाऊंगा मैं वहाँ पे. You'll be the only person who will be spreading some happiness, good vibes. Do you know what सबको ऐसे ही लगता है, सबको जो जाते सबको ऐसे ही लगता है वहाँ पे. और लेकिन अंदर जाने के बाद I can imagine how difficult it must be to just be surrounded by cameras all the time, and then you'll like people will judge you for like that one word you said somewhere, one sentence you said somewhere. It is very difficult. So hats off to Karan Kundra, Shamita Shetty, and all these current contestants. Everyone who goes to Bigg Boss, it is a difficult thing. So it's not just Bigg Boss, Yashraj. There's also another viral video with Kapil Sharma. I'm not done with. It's not viral yet, but it has got really good number of views, and it was I'm a huge Kapil Sharma fan. I love his comedy. I love the show, and I was when Netflix asked me. So when they put out the trailer of the special, I was really excited. So I commented on the video saying कि यार I'm really excited, looking forward to this show. So they noticed that, and then they asked me कि यार तू track बनाएगा क्या इस पे? मतलब बिल्कुल बनाऊंगा. So they asked me to take something from the trailer and make a dialogue mashup like I regularly do. So then I realized कि यार मुझे if I just make another dialogue mashup, then it wouldn't be that interesting. I have to add some melody. So I added a melody to that track, and from the trailer you can make out that it's not just
another stand-up special. It is a very personal approach, and like the things that he doesn't talk about on TV, he's doing it here on the Netflix special. So it was very personal, so I thought ki let's make a Punjabi dhol beat and add those words with it, and then add a melody also. Then I wrote a few lines, and then I asked one of my friends, Sonal Kaushal, she's a voice artist, asked her to dub those lines, and then I added a melody, and then the entire thing came out really well. So yeah, it was really fun, and I'm a Kapil Sharma fan. I'm hoping to meet him someday, but I was supposed to meet him actually, but he wasn't well, so वो थोड़ा रह गया. But I'll definitely try and meet him someday. अच्छा, एक और थी जो आपकी सेक्सी जो आपने बनाया था from Gangs of Wasseypur, that had also. So let's quickly go through these 5 viral videos and tell us one secret that people don't know. सेक्सी लग रहा था. क्या हुआ ना, मैंने बहुत एंड टाइम पे मैंने उसमें एक बहुत वाइटल चेंज किया. इट वाज सपोज टू बी अ, मेरा डायलॉग नहीं था स्टार्टिंग में, मेरे पहले मेलोडी आती है और सडनली सेक्सी लग रहा था आता है. तो आई एम श्योर इसके व्यूज इसके डबल होते अगर मैं वो चेंज करता, लेकिन एट लास्ट मोमेंट मैंने उसमें वाइटल चेंज कर दिया. सो या दैट्स द सीक्रेट. अगर वो नहीं करता तो शायद अच्छा वीडियो बन पाता. और उसमें आई हैव दैट रिग्रेट कि यार वो एक मैंने चीज क्यों चेंज की. बॉब बिस्वास वो तो इसके जी का जब ये हो रहा था, रिलीज हो रहा था, उनके लिए बनाया था. और उसका भी हाँ, आई थिंक अभिषेक सर हैज आल्सो शेयर इट ऑन हिज इंस्टाग्राम. तो वो भी अच्छा बना था. उसके लिए मुझे म्यूजिशियन फ्रेंड्स के बहुत वो आए उसके रिप्लाई कि अच्छा बना है. इट्स लाइक अ प्रॉपर सॉन्ग ना, मतलब डायलॉग उसमें एक ही यूज किया है, लेकिन अदरवाइज इट इज अ रैप एंड एवरीथिंग. सो या. एंड देन ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी तो बहुत इंस्टिंक्टिव, बहुत ही फास्ट फटाफट बना दिया था. एंड एज आई सेड कि शहनाज जैसे बात करती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पंजाबियत इन हर वॉइस, इन हर स्पीच, कि जो कुछ भी बोलती है ऐसे लगता है पंजाबी ही बोल रही है. कोई भी लैंग्वेज में बोलेगी तो ऐसे लगता है पंजाबी बोल रही है. तो पंजाबी मैंने सोचा कि इसमें अगर भांगड़ा ढोल होगा तो बहुत अच्छा लगेगा. एंड भांगड़ा ढोल तो मेरे दिमाग में वही बजा रहा था कि शाहरुख खान जो बजाते हैं मोहब्बतें में, तो वो उसके साथ सही जाएगा. तो मैंने वही फुटेज उठा के उसमें डाल दिया. एंड रसोड़े में कौन था? ये चाहे पुराना हो गया, इट विल बी एवरीवनस फेवरेट. हाँ, बहुत पुराना हो गया अभी. उसके आई थिंक आई एम क्लोज टू 90 मिलियन व्यूज. तो आई थिंक वो हो जाएगा. सो या वो तो बहुत ही इंस्टिंक्टिव, बहुत ही फटाफट किए हुए वीडियोस है. वो इतना सोचता नहीं था मैं. अभी जब पॉपुलर हो गए तो अभी सोचना पड़ता है कि यार चलेगा नहीं चलेगा, कितना ये डालना चाहिए, ये हटा दूं, इस पे तो डांस कर रहे थे लोग, तो इसको डांस ही बनाना है या नहीं बनाना है, या इसको सटल ही रखूं. तो अभी सोचता हूँ बहुत. वो पहले तो स्टार्टिंग के वीडियोस तो बिना सोचे बना दिए थे. और अभी जो बहुत चल रहा है ना, लेट मी गिव यू एन आइडिया, शार्क टैंक इंडिया. हाँ, ह्यूमरस मीम्स. आई एम बिंज वॉचिंग शार्क टैंक इंडिया. हर रात को मैं लगा देता हूँ, और मैंने सब वीडियोस आई थिंक सब कुछ 2-3 एपिसोड बचे होंगे, मैंने सब अश्नीर का कर लो. आई थिंक यू विल गेट अश्नीर. आई थिंक आई विल ट्राई डूइंग नमिता थापर का करने की कोशिश करूँ मैं. Ashneer has a lot of variety because you know there's this Ashneer has a variety, but most the memes people are sending me, there are most of Namita Thapar's clips where she's saying ki I am out, but all the best. Yeah, and she does that to almost everyone. It's not my expertise, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. This is not my expertise, मुझे समझ नहीं आ रहा है. I am out. So and she smiles and says all the best. So that's very funny. So I thought I should make. And who else do you like? I mean, see, Ashneer is like very upfront. Yeah, I like all. Actually, I like Ashneer also. Like he's upfront, and he's like, at first you think that he's rude, but he's not rude. He's just being very frank. As a show, मैंने बहुत expect नहीं किया था कि एकदम से सोनी टीवी पे इतना engaging कोई show बन पाएगा. So I'm really enjoying it. मतलब बहुत ऐसा tight show बनाई. And so if you had to ask for a deal with all the sharks, कि इतना invest कर दो, what would that deal be, and what are you expecting from everyone? So you know, मैं देखता हूँ, मेरे दिमाग में आता है मेरा प्रोडक्ट है एक दिमाग में. मैं सोचता हूँ यार कि अगर मैं सच में अगर स्टार्टअप शुरू करूँ और फिर ऐसे करूँ तो क्या सही रहेगा. मैं प्रोडक्ट तो बता नहीं सकता, लेकिन आई डेफिनेटली थिंक यार मैं जाऊँगा यहाँ पे या फिर ये पिच करूँगा. एवरीवन डज कि एपिसोड देखे कि यार ये हम ऐसे टीम बनाते हैं और जाते हैं, और फिर उसमें मुझे 500-6,000 करोड़ मिल जाएगा सबकी तरफ से, और मैं उसमें 1% इक्विटी दूंगा. Stupid scenarios I just keep imagining in my head, but yeah, it's fun. You being the viral sensation, also list those 5 biggest moments of your life. I think meeting with A.R. Rahman will always remain special. Yeah, that will always be on the top.
आई थिंक वो बहुत अमेजिंग मोमेंट था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी, मुझे मेंटली मुझे कहीं ना कहीं पता था कि आई समहाउ मैनेज टू रीच स्टूडियो समडे, maybe after a few years or like maybe after a decade. I'll do something and just reach a studio, just go and meet him and come back. That would be like the best thing. मैं इतना सोचा नहीं था कि इतने जल्दी और इतना स्मूथली और इतना इजीली हो जाएगा, तो that was one of those moments. Second, I think when Vishal Bharadwaj sir called me and he said he liked the videos, and he also said that you're musically I understand that you're musically also very you understand music, so that was really like, वो मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि म्यूजिक के बारे में कई बात करते हैं तो। एंड सेम अनु मलिक सर के साथ जब मैं उनको भी मिलने गया था तो उन्होंने भी ये बोला कि तुम काम अच्छा करते हो, ये फनी वगैरह भी ठीक है, लेकिन तुम्हारा म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। फोर्थ वॉज व्हेन आई मेट अनुराग कश्यप सर की, उन्होंने वो बोला कि आ जाओ देखते हैं, काम करते हैं, आप अपने गाने सुनाओ, तो मैं उनसे मिलने गया था। एंड यस ऑफ कोर्स आफ्टर दैट ऑन द सेम डे आई मेट अनुराग सर एंड द सेम डे आई मेट अमित त्रिवेदी। तो उनका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूं, ए आर रहमान सर और अमित त्रिवेदी सर। अमित सर का तो पूरा करियर राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन ही यूज्ड टू डू एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, तब से मैंने बहुत डिटेल में फॉलो किया है। सो ये बहुत टॉप मोमेंट्स थे। इवन सलीम मर्चेंट सर, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा था। तो ये सारे जो म्यूजिक से रिलेटेड लोग हैं, उनसे जब अप्रिसिएशन मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। And I remember Himesh had also called you on a reality show. Yeah, Himesh sir, yeah. Oh, that was for Little Champs का था वो। Yeah. और that time when I went there तो मैं उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि कोविड का बहुत ही पीक चल रहा था तब, सब दूर दूर से मिल रहे थे। तो मैंने फोटो भी लिया, तो वो वहाँ पीछे कहीं खड़े और मैंने ऐसे फोटो लिया उनके साथ। सो लेटर आई टॉक टू हिम अबाउट सम प्रोजेक्ट्स ऑन व्हाट्सएप, तो मेरा मतलब मैं बात होती रहती है उनसे। और उनका भी, मैं अभी एक्चुअली ये नया चीज़ शुरू किया ऑन माई चैनल विच इज़ म्यूजिक ब्रेकडाउन विद यशराज। इट्स अ शो वेर आई गो एंड मीट दीज पीपल और उनसे प्रोसेस उनका पता करता हूँ। सो आई थिंक येस, आई थिंक उनसे भी मिलूंगा, हिमेश सर से। एंड आई वुड रियली लाइक टू नो कि उन्होंने कैसे बनाया झलक दिखला जा, झलक तंदूरी। आई आस्क हिम अबाउट तंदूरी नाइट्स, आई आस्क हिम अबाउट हुक्का बार, आई आस्क हिम अबाउट all the songs he had made with Imran Hashmi and all. And So I'm a huge Jhalak fan. Diklaja, you do it really well, Yashraj. You croon it so well. Can we please have you sing that? जर्रे जर्रे से मैं तेरी आहट चुनता हूँ, ना 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 राहत मैं बुनता हूँ, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा 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 जा।